Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of organic farming, the next lecture is on constraints in organic farming. So please watch the objectives, characteristics which are available in the playlist organic farming. So constraints are different from the disadvantage. Constraints are the problem what we face during any work. These are the constraints, and disadvantage is that if we get something loose, then it is disadvantage. तो कॉन्स्टेंट और डिसएडवांटेज में अंतर होता है. कॉन्स्टेंट वो होते हैं जब हम कोई काम कर रहे हों और उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस काम को करने में, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स. जबकि डिसएडवांटेज में होता है कि हमने कोई काम किया और हमें कुछ लूज कर गए, हमें कुछ लॉस हो गया, दैट इज द डिसएडवांटेज. So these are the constraints, not the disadvantage. So don't be confused with the disadvantage. So these are the constraints. So when we practice organic farming, what are the problems we face? These are the constraints, and there are many problems we can say. There are many constraints in organic farming. Actually, organic farming mode of nutrition is mainly organics. We use the natural compounds. We do not use any synthetic compounds. So mainly reliance is on organic. So when we use the organics, so this organics may be FYM, may be compost, or maybe green manuring, or maybe biofertilizer for the nutrient source, biofertilizers, or maybe a crop residue. So in the use of this, there is a constant, there is a problem. For example, in FYM of compost, we use 10 to 15 ton per hectare, and this is the huge amount. So quantity is the constants. So to apply the 10 to 15 ton per hectare, we have to produce the such amount of FYM and compost. It cannot be used by purchasing from the outside. It means we have to produce on the farm. This is too much amount. If we are using the vermicompost, in case of vermicompost, it is about 5 ton per hectare. Amount is less, but we have to prepare. So technical skill is required for vermicompost. So this is the constant in vermicompost. We have to rear the earthworm. And in case of FYM compost, availability, quantity, availability, it means we have to rear livestock. तो इतना बड़ी अमाउंट के लिए हमें कुछ जानवर पालने पड़ेंगे, उसके लिए फिर हमें फॉरेज एरिया लेना पड़ेगा. वो एक कांस्टेंट होगा. ऐसा नहीं हो सकता हम बाहर से खरीद के गोबर डालें, तो वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा. वर्मी कंपोस्ट में डालना है तो हमें वर्मी कंपोस्ट बनानी पड़ेगी फील्ड पे, उसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, अर्थवर्म केचू को पालना पड़ेगा. सो दिस इज द कांस्टेंट. इट डजंट मीन दैट वी आर नॉट यूजिंग. इट मीन्स दैट if we maintain the availability, we have developed the skill, we have the training, then we can do this work. It means organic farming is not just the application of the organics. We have to develop, we have to produce these compounds. Then similarly in case of green manuring, water is must. It is practiced in irrigated condition, because we grow the any legume crop like sesbania, and we incorporate into the soil and we left it for decomposition. After decomposition, there is release of nutrient. So this is the constraint. So in every area, green manuring cannot be practiced. It can be practiced on those areas where water is available for decomposition. Similarly, in case of biofertilizer, availability in the market, azotovector or acetovector, azospirillum or rhizobium or VAM, their availability in the market is the problem. So they are not available in every market. So farmer want to purchase the biofertilizer, so this availability is the problem. So this is the constant. Then with the crop residue, constant is that there is a competition for the feed, कि उस क्रॉप रेजिड्यू जो हमारा निकला है उसको हम एनिमल को दें या सॉइल में इनकॉर्पोरेट करें. तो कंपटीशन इज विद द फीड, फॉडर फॉर फीड टू एनिमल. तो जो गेहूं का जो निकला है वो हम जानवर को दें और यूज एज ए रिसाइकलिंग. सो दिस इज द कॉन्स्टेंट. सो दीज आर द कॉन्स्टेंट विद द यूज ऑफ ऑर्गेनिक्स. सिमिलरली there are many constraints according to their input. Then second one is related with the nutrient management. So nutrient management is through natural source, biological cycle, biofertilizer, whatever natural things are present. Fertilizers are not allowed, particularly synthetic nitrogen fertilizers are not allowed, totally prohibited. And nitrogen requirement is highest, about 120-150 kg per hectare. In case of cereal and pulses, it is in sugar cane, it is about 180 kg per hectare. So in cereals and
sugar cane and other crop, nitrogen requirement is high. So how to manage the nutrient, how to manage so much quantity of nutrient? It is not possible with the organics and FYM compost. If we apply the huge quantity of compost to supply the nutrient, then there is a nutrient imbalance by the compost. Second problem is that this dung or FYM or compost applied in huge quantity, there is a micronutrient chelation. So micronutrients have coordination with the organic compound and they fixed and not released. तो अगर हम ऑर्गेनिक्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, गोबर की खाद को, FYM को, तो एक तो दूसरे न्यूट्रिएंट ज़्यादा निकलेंगे, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट इंबैलेंस हो जाएगा. दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, डेफिशिएंसी occur because it is chelation with organic carbon, or organic matter, we can say organic matter. So this is the problem. So nutrient management is the problem, particularly with the nitrogen, which is required in large quantity, and this nitrogen is subjected to various losses: leaching, denitrification, volatilization. So to maintain the nitrogen in the soil system is also constant. So how to fulfill the nitrogen requirement? So that's why we use different mode, not the FYM. We use the biofertilizer, crop residue, several means. Another problem is the micronutrient application. So for example, in case of rice khera disease is very common, and this is due to zinc deficiency. And if in the field it is due to zinc deficiency, so in the field in standing crop there is a khera disease, then we have to apply a foliar spray of zinc sulfate. Now the zinc sulfate is allowed, limited zinc sulfate is allowed, but if it is not rectified by the limited spray, then there is no other means. Similarly, other micronutrient deficiency like copper, manganese, then it is difficult by the foliar spore of any ore. So this is the problem with the micronutrient and particularly with the nitrogen. So this is the constraint with the nutrient management, how to fulfill the nutrient requirement. So it means we have to use several natural ores, minerals, and all the available biological sources. So these are the constants, and to arrange all these things become problematic. So this is the constraint in nutrient management. Then in pest management, insect or disease management, you can say pest management, particularly we talk about disease and insects. So we have to control all these things by biological agents, natural way, in natural, and the biological methods or preventive methods and physical methods. So as far as biological methods are concerned, so natural predator and parasite maintenance and their conservation is constant. Suppose we want to release a trichogramma chilonis, and it is a wasp which control the Lepidoptera insect by feeding the egg. So we release the egg card of this trichogramma. So availability of this bioagent, we can say availability of this bioagent is the problem. Similarly, trichoderma fungus control the damping of disease. Trichoderma, this is the fungus, is control. This fungus control the diseases. So their availability in the market to all the farmers is a constant. So it is not like that these are not available. ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में इनकी अवेलेबिलिटी और हर फार्मर तक ये पहुंच जाए, ये एक कांस्टेंट है, ये एक प्रॉब्लम है. और जो बायोएजेंट्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा बायोएजेंट नहीं है. देन सिमिलरली बोटेनिकल्स, वी आर यूजिंग द बोटेनिकल्स लाइक azadirachtin or rotenone or pyrethrin. So their availability is also of botanicals. तो जो भी हम प्लांट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं नेचुरल, उनकी अवेलेबिलिटी. सिमिलरली वी आर यूजिंग द बीटी प्रिपरेशन माइक्रो ओके टू कंट्रोल द इंसेक्ट. तो इसकी अवेलेबिलिटी टाइमली हो जाए और सबको हो जाए, दिस इज द कांस्टेंट. सो कांस्टेंट इज द timely availability in adequate amount to all the farmer. It is the constant for the pest management. Similarly, in case of then weed management, actually weeds are controlled mainly by the preventive methods and the cultural methods and physical methods, and herbicides are not used.
and this cultural or mechanical methods are good if it is a wide spaced crop. So if it is wide spaced crop, so we can run any cono weeder or any weeder or power weeder, rotary weeder in this space. But if it is a narrow space crop like wheat, we are growing the wheat, for example. So we cannot run any implement. We cannot run the power weeder. So hand weeding. So we have to go hand weeding. So for hand weeding, number of levers, more number of levers are required. Then if we use the more lever, then it is not economical. So this is the constraint, availability of the lever, particularly in narrow space crop. In wide space crop, we can run the any type of machine. Then second is that if soil is not under workable condition, crop is wide spaced like sugar cane or maize, we can go for weeder or cultivator or other. But suppose at the same time there is a rainfall and soil is not workable condition, then we cannot run the implement. अगर कोई वाइड स्पेस क्रॉप है, मक्का है, शुगर केन है, उसमें हम कल्टीवेटर अदर चला करके वीट कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन जब हम वीट कंट्रोल करने जा रहे हैं उसी समय रेन्स हो जाए तो खेत गीला हो जाएगा, फिर हम इंप्लीमेंट नहीं चला सकते. अब खेत गीला हो गया, रेनफॉल होगी तो वीट्स और बढ़ जाएंगे. अगर हम हर्बिसाइड अलाउ होते तो हम हर्बिसाइड को यूज कर लेते और तब वीट कंट्रोल कर जाते. सो दिस इज द कॉन्स्टेंट. सो इफ देयर इज रेनफॉल, तो ड्यूरिंग द रेनफॉल वी कैन नॉट डू परफॉर्म एनी वर्क, hand weeding, hoeing, any type of mechanical or physical mechanical practice is not possible. तो ये वीड मैनेजमेंट का कांस्टेंट है, पर्टिकुलरली इन नैरो स्पेस क्रॉप. कि नैरो स्पेस क्रॉप में हमको इंप्लीमेंट ही नहीं चला सकते. हम टोटल किस पे डिपेंडेंट है? हैंड वीडिंग पे या प्रिवेंटिव मेथड्स पे डिपेंड है. सो दिस इज द कांस्टेंट. देन अनदर कांस्टेंट, we can say other constraints is that we are producing the healthy food, nutritive food. Okay, so we want to get more price, but there is no reasonable premium price. In organic cultivation, our objective is to produce healthy food. That's why we are not providing any synthetic, any pesticide. तो अब हम ऐसा फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो न्यूट्रिटिव है, तो उसका हमें पैसा भी ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें कोई केमिकल नहीं डाला है, तो उसका प्रीमियम प्राइस मिलना चाहिए 20% या 25%. लेकिन उसका प्रीमियम प्राइस उतना नहीं मिल पाता जितना होना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उसका अच्छा प्राइस मिले, तभी हम ऑर्गेनिक की तरफ आगे बढ़ेंगे. लेकिन वहाँ रीजनेबल प्रीमियम प्राइस नहीं मिलता, 10% या 15% ज़्यादा मिलेगा. तो रीजनेबल प्रीमियम प्राइस इज कॉन्स्टेंट. बट इन सम सिटीज़, मेगा सिटीज़, these organic products are sold at high price. लेकिन जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ ऑर्गेनिक के जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हैं, चाहे ऑर्गेनिक शुगर, ऑर्गेनिक राइस, ऑर्गेनिक व्हीट, उनका दाम बहुत अच्छा होता है. दे गेट हाई प्राइस. बट इन स्मॉल एरिया और स्मॉल cities, consumers are not ready to purchase the high cost of this organic produce. So this is the constraint in small cities. तो छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ सुपर बाजार हैं, बड़े बाजार हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बहुत जल्दी बिक जाता है, वहाँ रीजनेबल प्राइस मिलता है. लेकिन इन स्मॉल सिटी इट इज प्रॉब्लम. देन अनदर इज द कंज्यूमर ट्रस्ट. कंज्यूमर ट्रस्ट about the superiority, about the quality. If we sell the produce of organic, so there is a doubt whether it is organic or not, because now we cannot certify it. अगर हमारे पास गेहूं है या कोई सेब है या वो है ऑर्गेनिक, तो हम उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते ऑर्गेनिक है या नहीं है. सो दैट्स वाई कंज्यूमर लैक द ट्रस्ट एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन सेल. सो दिस इज द कॉन्स्टेंट, हाउ टू डेवलप द ट्रस्ट अमंग द कंज्यूमर दैट इट हैज सुपीरियर क्वालिटी. देन अनदर constant in organic product, we can say the lack of proper market, so that they can produce. So there is not a organized market for the organic produce in cities. ऐसा कोई शहरों में कोई एक बहुत ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि वहाँ किसान जाए और वो ऑर्गेनिक मार्केट ही और वहाँ ऑर्गेनिक उनको मिल जाए खरीदने वाले. सो लैक ऑफ प्रॉपर मार्केट. बट दिस प्रॉब्लम, ये जो है बड़े शहरों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. जहाँ बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी है, वहाँ तुरंत बिकता है. लेकिन बहुत सी जगह पे प्रॉपर, जैसे विलेज है, विलेज में है, कोई बहुत दूर नहीं ले आ सकते उसको. तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर मार्केट वेयर वी कैन प्रोड्यूस, स्पेशल मार्केट फॉर द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. देन अनदर कांस्टेंट इज इन द ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट. बिकॉज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग we have to
follow some protocols, standards, and how to produce the compost, and how to produce the vermicompost, how to use the biofertilizers, how to maintain the farm, how to avoid the contamination, how to maintain the farm. So training is required, skill development is required, and diversification is must in organic farming. So different components are there. So maybe poultry, maybe piggery, maybe fish pond. So how to maintain the fish pond, how to maintain the poultry, training is required. So in everywhere training, government organize the training. It is not that ट्रेनिंग करवाती है गवर्नमेंट, लेकिन हर जगह ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, फार्मर वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसका स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है. सो दिस इज द कॉन्स्टेंट. देन अनदर कॉन्स्टेंट इज द सम स्टैंडर्ड्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल, and the certification, accreditation, and farmers are not fully aware with the what are the standards, what are the protocols. किसान को पूरा पता नहीं है कि कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन सी सर्टिफिकेशन एजेंसी हैं जो सर्टिफाइड करती हैं. किसान ये केवल ये ना समझे कि हमने गोबर की खाद डाल दी और कोई हमने केमिकल नहीं डाला, दिस इज ऑर्गेनिक. ये ऐसा नहीं है. जस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नो यूज ऑफ सिंथेटिक इज नॉट ऑर्गेनिक फार्मिंग. कि केवल गोबर की खाद डाल देना और किसी भी केमिकल यूज ना करना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होता है. वी हैव टू फॉलो several standards, several protocols. We have to develop the landscape. We have to avoid the contamination, pollution. Actually, there is a concept of living farm. So the living farm concept is there. So certification agencies are there which certified that the product is organic. Farmer cannot certify itself that it is organic. Farmer अगर produce भी करेगा तो वो ऑर्गेनिक मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम से नहीं बिक सकता जब तक कि उसको कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी सर्टिफाइड ना कर दे. तो सर्टिफिकेशन इज मस्ट. सो इट इज कॉन्स्टेंट फॉर द फार्मर हु आर इलिटरेट. ऐसे किसान जो नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, दैट्स वाई ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स. देन अगर ये कॉन्स्टेंट्स रहेंगे तो फार्मर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे नहीं जाता है. तो ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं फार्मर से. और जो पॉलिसी है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, लेकिन पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो बहुत से फार्मर्स नहीं ले पाते हैं. तो नेक्स्ट इज दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड्स लाइक कन्वर्जन पीरियड इज देयर. कन्वर्जन पीरियड, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट. इट कन्वर्जन पीरियड इज फॉर 3 years. मीन्स a farmer want to start a organic farm, suppose it is conventional farm, in first year, okay, in first year he develop up to the conventional, now it is start the organic farming. In first year, in rice wheat rotation, suppose he use all the organic, he doesn't use any type of chemical. Then in second year he use same practice. Then in third year he use the same practice of organic, but the produce during the first year, second year, third year are not considered organic. So there is a conversion period of 3 years. When a farm is converted from conventional to organic farm, so 3 years are required. After 3 years, the produce is certified organic. जब एक conventional farm organic में convert होता है, हम कोई chemicals use कर रहे हैं किसी field में और उसको हम organic में develop करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे. जब हम लगातार 3 साल तक ऑर्गेनिक करेंगे तो 3 साल बाद जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होगा. सो दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ए कन्वर्जन पीरियड एंड इट इज फॉर इन जनरल 3 years. तो 3 years का जो कन्वर्जन पीरियड है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द फार्मर कैन नॉट सेल द प्रोड्यूस एज ए ऑर्गेनिक. ही हैज टू सेल द प्रोड्यूस एज ए कन्वेंशनल प्रोडक्ट एंड ही इज यूजिंग द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट प्रोडक्ट इज सोल्ड एज ए कन्वेंशनल फार्मिंग. प्रैक्टिस तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहा है 3 साल तक, लेकिन प्रोड्यूस उसका कन्वेंशनल फार्मिंग जैसा ही बिक रहा है. तो यहाँ उसको उतना प्राइस नहीं मिलता है. तो यहाँ उसको ये कांस्टेंट है 3 साल का. तो इफ फार्मर कैन टॉलरेट दिस कन्वर्जन पीरियड, उसको अवॉइड करे या उस पर इतना हो कि उसको सस्टेन कर जाए इस पीरियड को, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं 3 साल. तो 3 साल का ये पीरियड है. एंड मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल. इफ वी अडॉप्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग जस्ट आफ्टर कन्वेंशनल, तो उसमें 3 साल तक तो उनको प्रोड्यूस का हाई प्राइस मिलेगा ही नहीं, ऑर्गेनिक होगा ही नहीं, उनको कन्वेंशन की तरह मिलेगा. और व्हेन वी शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑर्गेनिक, डेफिनेटली देयर इज अ रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी. और जब हम कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक में जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, क्योंकि तुरंत जो सॉइल सिस्टम है चेंज होता है, उसको कन्वर्जन लगता है. अब प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है और हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो अब हमको पैसा क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस हमारा ऑर्गेनिक नहीं. अगर यही हमारा ऑर्गेनिक होता तो पैसा मिलता. बट दिस कन्वर्जन पीरियड इज मस्ट
because in soil there are pollutants are there, toxicants are there. So it is a time so that toxicants or pollutants are eliminated. So it is elimination time, it is must. So this is the conversion period, particularly this is constant for small farmers which require the regular income. So these are the important constants in organic farming, but this problem can be rectified. These constants can be removed. ऐसा नहीं है कि ये constants की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो पाएगी. प्रॉब्लम हर जगह रहती है, कन्वेंशनल की भी अपनी फार्मिंग है, केमिकल की है, ऑर्गेनिक की है. तो वी कैन रिमूव दिस कॉन्स्टेंट्स बाय अडॉप्टिंग द प्रॉपर प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको हमें अवेयर होना चाहिए. हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है. केवल ये नहीं कि गोबर की खाद डाल दी और हमने कोई भी केमिकल नहीं डाला और हमने कह दिया ये ऑर्गेनिक है, ये नहीं होता है. उससे स्टैंडर्ड्स हैं, उसको सर्टिफाइड हमें कराना पड़ेगा और जो अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा. इट मीन्स वी हैव टू डेवलप ए फार्म, सस्टेनेबल फार्म. वी हैव टू डेवलप द डाइवर्सिफाइड सिस्टम कि हमें रेगुलर इनकम में होते रहे, हर इंटरप्राइज हमारे पास होना चाहिए. दैट्स वाई there are some standards and protocol. If we follow the standards and protocol, then these constraints can be removed. So these are about the constraints in organic farming. Thank you very much.